लिख लीजिए रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। मैंने आपको सिखाया हाउ टू calculate average cost and marginal cost from the total cost. So it establishes also a relationship between average cost and marginal cost. We have also a relationship between total cost and marginal cost. So first we must know what is the shape of curve of average cost and marginal cost. For example, this is the shape of average cost and this is the shape of marginal cost. Yes, if OHAC shows output produced or level of output and OY shows marginal cost and average cost. These two curves shows relationship between average cost and marginal. Yes. We can have also a table which shows a relationship between average cost and marginal cost. मैंने आपको घर के लिए भी टेबल दे दिया था how to calculate average cost, marginal cost, total cost. If this is level of output, this is total cost, we can have average cost and we can have marginal cost. Average cost is total cost divided by Q. This is Q. Marginal cost, change in total cost as a result of change in Q. If this is 0, 1, 2, 3, 4, as level of output increases, the total cost is here 10, it is 20, it is 28, it is 34, it is 38, 42, 48, 7, 56, and 8, 72. You must have average cost calculate 10 divided by 0. Yes, sir. It is infinity. 10 divided by 0 is infinity. 20 divided by Yes, 1 sir. it is 20. 28 divided by 2 it is 14. Yes, sir. 34 divided by 3 it is 11.3. 38 divided by 4 9.5. 0.5. Yes. माहिरा ने मुझे सेंड किया था Yes, sir. कैलकुलेट इट, थोड़ा- वो गलत था। Yes, sir. माहिरा आ गई है, वो मार्जिनल Yes, sir. कॉस्ट इसको कैलकुलेट करना नहीं आया। So 42 Yes, divided by 5, 42 divided by 5, 8.4, 8.4. Yes, sir. 48 divided by 6, 48. 10.9. 56 divided by 7 it is 8. It is, yes, 8. 72 divided by 9 it is 9. और भी कुछ मैंने किया था, Yes, sir. कुछ 92, 9, sir. 9. 92. 92, 9, 92 by 9, 9 दहाया Yes, sir. 90, 10.2. 9 दुनिया 18.2। हाँ, यहाँ आपको प्रॉब्लम हो गई थी, ये कैलकुलेट करना शुद्ध क्या है, ये वुचन चेंज कच आय यथ मज, Yes. यह मे वोनमो तुम ये पे योत कच चेंज आय, 10 पे 10 तान आय 10 हज चेंज, इथे पे 20 पे 58 तान आय 8 हज चेंज, यह तुम तोगमुत कैलकुलेट कर क्या, Yes, sir. 2 पे 34 तान 6 हज चेंज, it is change of 4. MC Yes. चाहता है. इथे पे 42 swallow 38, 4, 48 swallow 42, I threw 6, यह से गलत कोरमुत, इथे पे ये 7 8, 2 वालो 56, I threw
So that's the shura, eh? Yes, sir. It go woo. So this is how to calculate the marginal cost. Yes, sir. लिखिए अब point first, relationship between this Marginal cost and average cost, relationship between marginal cost and average cost. लिखिए number first, average cost. yes, number first लिखिए, Yes, sir. लिखिए both average cost and marginal cost are calculated, पहली relationship, from total cost. दोनों calculate करा relation रिश्ते दोनों calculate करा total cost on the basis of total cost. That is average cost बराबर total cost divided by Q. The marginal cost change in total cost divided by change in output producer. Okay. Yes, sir. Margin MC. This is MC. This is MC here. MC. ठीक है? यहाँ क्या ऐसे पर बना हुआ है MC आसाम बराबर उनकी equation MC आसाम बराबर total cost at nth unit minus total cost at n minus 1 unit. So from these three formulas, we Sir, I think last time I think. action Yes, sir. total cost at nth unit minus total cost at n minus 1 unit. So this is first relation. Yes, sir. दोनों ऐसे calculate करा from total cost and from level of output. So this is first relation. Yes, sir. This is first relation. Second relation आप लिख लीजिए. Second relation ये हो गया. Yes, sir. Second relation Yes, आप लिख लीजिए. When AC is falling, AC should go fall. Fall. The MC also falls. Number two, when AC is falling, the MC also falls. MC also falls, and MC is lower than AC. Yes, stages time. Yes, stages time. Lower than AC. Yes, isn't carbon stage at all. Yel AC to fall gasa, MC to fall gasa. Magar MC to asan below than AC. MC marginal cost asa come average cost. Average cost line cha here, marginal cost line cha bun. Este mana yel say donawai to fall gasa tim sa asa MC lower than AC. MC to asan come AC quad. Okay. Yes, sir. So when average cost is falling or it falls, marginal cost is less than average cost. From the figure, we see when AC is falling, the MC also falls, but MC is lower than AC. But MC is lower than AC. AC. Yes. Number third relation आप लिख लीजिए. Yes, sir. The MC cut AC at its lowest point. MC marginal cost करूँ. Yes, sir. Cuts average cost करूँ at its lowest point. At its Lowest. lowest point. एमो मतलब गो ये ले MC कट करा एक ये तक AC करवे तम साथ आसान average cost lowest point पे एम बुन छुन AC आसान एम साथन तो यम साथन MC कट करा AC या AC आसान के बराबर तम साथ AC आसान at the lowest point. At the lowest point. Yes, at the lowest point. So when MC
is equal to AC, the AC is at the lowest point. Or when MC curve cuts AC curve, the AC is at the lowest point. Number, you look for? Yes, sir. Yes, sir. Number next आप लिखिए किचम से लिखूं Oh, theorem. fourth Yes, sir. AC rises, the MC also rises. MC also rises. MC also Yes, sir. rises, but Right. MC is greater than AC. Greater than AC. Yes. Yim satan AC छ हमारा average cost हमारा rise गसुन, marginal cost हमारा rise गसुन. Yes, मगर तम साथ आसान MC ज्यादा AC खोत. को यम साथ rising position छ आसान दोनों rising situation छ आसान दोनों तम साथ छ MC आसान greater than AC. MC is greater than AC. AC. is greater than AC. When AC is rising, MC is greater than AC. When AC is constant, as at point E, or here at point E, point E पे, the MC is equal to AC. Eh? Yes, sir. So this is the marginal cost and average cost. Average cost. Yes. अब हमारा रिलेशन है between total cost and marginal cost. This is the relation. यहाँ आप और भी कुछ लिख सकते हैं in the crux क्या है इसका? Number first is when AC is falling, the MC is less than AC. ये symbol समझ आती है? ये less than symbol. Less Yes, sir. Yes, sir. AC to fall गसन, MC च आसान कम AC. Yes, sir. Number Yes, sir. second, इसी तरह दूसरी situation है when AC is rising, the MC is greater than AC. Number third, when AC is constant, यम सातन बराबर च आसान ये पकान. In this situation, 8 and 8, AC is 8 and 8. 8, yes, sir. Yes, sir. Constant. तम साथ आसान MC to AC बराबर. So when AC is constant, MC is AC. Yes, sir. Beyond situation che, Yes. MC is always to the left of. इच आसान दो है हमेशा आसान che अगर तो आसान खोहरी तरफ AC कर. इच खोहरी तरफ MS रोज़ा. MC करू Yes. is always to the left of AC. AC curve. Yes, sir. Yes, and cuts AC from its lowest. और ये हम fifth point भी बना सकते हैं. The MC curve cuts AC curve from its minimum at its lowest point, or at its lowest point, or from the minimum. Yes, sir. Yes, sir. So this is the relationship between AC and MC. AC and MC. Thank Relation between marginal cost and total cost. Total cost. Yes. Relationship between Marginal cost and total cost. exactly. लिखिए a relationship between
marginal cost and total cost. And Yes, sir. TC. Yes, sir. Yes. First relation is Yes, sir. marginal cost is difference between two Between between total cost of yes, two successive units of output. Successive units of output. Dun output stage hund difference ch asan marginal cost. Yeah. Output stage nimo kas teman total cost teman karo difference bane marginal cost. yes, sir. For example, output cha ase base total cost. Output 1, 2. Yet total cost at output level 1, for example, 10, output level 2 is to 20. Niman dun kya difference? Ye banya marginal cost. So this is marginal cost. 20 Yes, sir. minus 10. Right? Yes, sir. Total 10. cost at nth unit minus total cost at n minus 1 unit. 20 minus 10, it is 10. Whose 10 is marginal. Yes. You thought Yes, sir. also don't successive units. Don't output unit or total cost is different has been marginal cost. So to marginal cost is difference between Yes. total cost of two successive units of output. That is marginal cost one of which it is total cost at n minus total cost at n minus 1. This is nth unit of total cost. It is n minus 1. Total cost of n minus 1 units of output. Okay. Yes. Number second is Yes, sir. total cost is sum of marginal cost. Sum of marginal cost. It is sum of marginal cost. That is, Marginal cost. yes, total cost is summation of marginal cost. Total cost is sum of marginal cost. Cost. Yes. Number 3. When marginal cost is decreasing, marginal cost decrease is decreasing. Differential. Yes, total cost increase at decreasing rate. Increase Point. at Yes, sir. decreasing rate. Yes, sir. Yem satan marginal cost decrease gasan, total cost increase gasan at decreasing rate. At decreasing rate. Ithai paitin beak talo is when marginal cost is constant. Agar marginal cost constant rood, total cost gets increase at constant rate. At constant rate. Agar marginal cost constant rood, total cost gets increase at constant rate. Constant rate go barabar rate. Agar 10 khatis bekis points pet khasan da, bekis pet da. Agar marginal cost same also. For example, bonta is put Q is output level, T is total cost. This output level increase kara 1, 2, 3, 4. Sorry, ये तो था marginal cost. ये था marginal cost. Guarding is point is pet khot da, 3 is pet da, 3 is pet da, 4 is pet da. Total cost क्या गया? Total cost ये तो da, देख हसनस da तो da गए वो तो da गए 3 तो da गए 40. Go प्रह जायशस da खाता. प्रह जायशस. Yes, sir. So when it increases at the same rate, that is constant rate. Same rate means it increases. Constant. Yes, constantly. It increases constantly. Yes, sir. Number 5 is marginal cost increase, guys. When marginal cost is increasing,
the total cost increase at increasing rate. At increasing rate. Total cost increase gژھان at increasing rate. Increase. So we can say yim satan marginal cost as increase gژھان أسۍ وَنو total cost increase gژھان at increasing rate. بیاکھ relation دِمہٕ بہٕ when marginal cost is zero. یہِ گژھِ یاد تھاوُن ییٚمہِ ساتہٕ چھِ marginal آسہِ marginal کانٛہہ تہِ concept zero آسہِ سُہ marginal utility ٲسۍتن سُہ marginal production ٲسۍتن سُہ marginal cost ٲسۍتن total چھُ آسان maximum. ییٚتہِ چھِ cost ہٕنٛز دٔلیٖل اگر marginal cost zero آسہِ the total cost will be maximum. تَمہِ ساتہٕ آسہِ total cost maximum آسہِ تَمہِ ساتہٕ total cost. Okay. Yes, sir. So this is the relationship between total cost and Marginal cost. marginal cost. You godnok point yus tey hud likhu su yetti likhu tey the marginal cost is calculated from total cost. Each of relation calculated from total cost. Il total cost as tel heko is marginal cost calculate kariye godnok birth chi dema total cost that is use marginal cost ch asan such asan change in total cost due to change in output. Due to change in Output. Okay. Yes, sir. इन पॉइंट्स पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए. ठीक है में मसला तुह दिमहा बह सवाल तुह बनइहु गर कर्व खाली बनइहु तुह कर्व क्या Yes, sir. आप कर्व्स बनाने हैं. पेपर लिखिए आप क्वेश्चन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन बिलो. ये हो गया. Yes, sir. ये हो Yes, गया. sir. ओके from the information below construct average cost, marginal cost, average fixed cost and average variable cost curves. ठीक है. We have level of output. Sir. This is Q. ठीक है. फिर क्या नजर है वहाँ की? No, sir. अब आ गया. Yes, sir. अब नजरे. Yes, sir. बस हो गया. अब ठीक. From the information below, construct AC curve, MC curve, AFC curve, and ABC curve. Average variable cost curve. हम करियो तो calculate the aftermath. We have output 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. हम curve करें. We have marginal. That's marginal cost here. 15,
12 गुड करोन ये डिक्रीज है 12 जितकस बचा 3 है 10 we have 9 ठीक है 9 without 9 8 we have 6 7 8 6 we have here for example ना एम सुधी थाउन ये चटियो तो एम सुधी टेबल अथी करो इधर उधर ये छुन पता क्या है ऐसे यहाँ हमें पता नहीं है 15 12 18 19 21 26 for example this is 32 this is 40 each has marginal cost this is our marginal cost. तो you could do total cost m was average cost you need average fixed cost average variable cost total cost बराबर आसान summation of marginal cost ठीक है average cost आसान total cost divided by q fixed cost average fixed cost आसान आपको fixed cost ही पता नहीं है तो चलिए यहाँ Fixed cost divided by output. fixed cost करियो ना fixed cost variable cost ये काम थोड़ा average fixed cost and average variable cost you should try करें आज बनने के आदि तो ये समझ fixed cost आसान बराबर fixed cost लगते पाने पता fixed cost आपको खुद निकालना है यहाँ variable cost भी जो total cost होता है summation of this it is summation of marginal cost or total cost can be fixed cost plus variable cost which आसान total cost बराबर fixed cost plus variable cost average fixed cost आसान बराबर fixed cost divided by q average variable cost आसान बराबर variable cost divided by q Yes, sir. so मैं answer for example यत क्या ES यत क्या था वो total cost यत क्या पाने था वो total cost क्या था वो zeros पर चे Yes, sir. zero पे हमें खुद ही रखना है हाँ अच्छा बताओ फिक्स्ड छोड़ो टोटल कॉस्ट को छोड़ो बताओ फिक्स्ड क्या कॉस्ट क्या रखेंगे फॉर एग्जांपल हम फिक्स्ड कॉस्ट 10 रखेंगे ठीक है हैं Yes, sir. वेरिएबल कॉस्ट क्या है 0 पे 0 Yes, sir. वेरिएबल कॉस्ट हमेशा 0 होता है तो टोटल कॉस्ट क्या बन गया टोटल कॉस्ट बन गया फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट 10 plus 0 it is 10 10 plus 0 it is 10 Yes, sir. हाँ अब Yes, sir. आपको खुद समझ आएगा एवरेज कॉस्ट क्या निकालना है कैसे निकालना है 0 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 0 यहाँ इन्फिनिटी आएगा एवरेज कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट पता नहीं है Yes, यहाँ sir. 0 पे है अब आप कैलकुलेट कर दीजिए ये और इनके कर्व्स भी बनाओ अलग अलग पहले मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट ये बनेगी यू शेपर्ड ये बनेगी यू शेपर्ड इसी तरह Sir. है Yes, sir. अब बनाना कैसे Yes, sir. ठीक है आएगा Yes, sir. समझ आएगा प्रैक्टिस कर लो Yes, sir. कोशिश करेंगे हम अच्छा अच्छा एक काम करो जो ये टेबल है इसको आप खाली कैलकुलेशन दे दो आती खाली कैलकुलेशन अथ बेस पे बनायो ये करू कहें करू बनायो तुम
टेबल्स पे उसमें ऑलरेडी दितमुत सु टेबल उसी पे आप बना दीजिए, ठीक है? जो मैंने ऑलरेडी दे दिया ना, ऑलरेडी मैंने दे दिया है, हैं? Yes, sir. समझ क्या ना, इसको आप खाली कैलकुलेट कर दीजिए, या पर करियो तो खाली कैलकुलेट है, ठीक है? जो अभी मैंने टेबल दे दिया ना, इससे पहले जब रिलेशनशिप थी उसमें आप बना दीजिए। क्या समझ क्या ना? Yes, sir. ये एक टेबल है, इसमें आप ये कर दीजिए कैलकुलेशन, तो दूसरे टेबल में आप करू बना दीजिए, तथ मज बनाइयो तुम करू यह टेबल्स, इसमें आप कंस्ट्रक्ट एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, we can say average fixed cost and average variable cost curves. ये है level of output, ये है हमारा टोटल कॉस्ट, इसमें मार्जिनल कॉस्ट ये आपने कर दिया, एवरेज कॉस्ट भी कर दिया, फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना है, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, और ये भी आपने कर दिया, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट करना है कैलकुलेट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल आउटपुट इज 0 1 2 3 4 5 6 7, अभी हमने कर दिया ना, वही फोन है टेबल, Yes, sir. Yes, sir. टोटल कॉस्ट इज 10 20 28 34 38 42 48, ये कोता करियाव अस यत ये मार्जिनल कॉस्ट क्या ओस यत 6, यत ओस 4, यत ओस 6, 8 8 गई 10, 8 खालोस हैं, Yes. ये 56 हैं, 8 Yes, sir. ये कुछ 8 हैं, 10 खालोस 66 9 76, ये अब कर दीजिए, यथ मज करियो कैलकुलेट यम कॉस्टस तो बे बनाइयो और करो मुझे बना के दे दीजिए, कर्व्स बना के दे दीजिए, आई नीड कर्व्स। तो ये होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू, ये है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ आएगा यही 10, जो 0 पे है ये 10 आएगा फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 0 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, इसी तरह ये 10 10 आएगा, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड, Fixed. Yes, sir. यस। यम करू कैलकुलेट बे दियो कर्व बनाइयो, अह बनाइयो फिक्स्ड कॉस्ट करू, बे बनाइयो वेरिएबल कॉस्ट करू, बे बनाइयो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट करू, बे बनाइयो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करू, ये आपको बनाना आएगा मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, अलग अलग 5-6 डायग्राम्स, छोटे छोटे 5-6 डायग्राम्स बना के दे दीजिए। सो दिस इज योर होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है। एक जो इससे पहले टेबल मैंने दे दिया उसमें कैलकुलेट कर दीजिए, इसमें भी कैलकुलेट कर दीजिए, और इसमें से कर्व्स भी बनाइए, डायग्राम्स भी बनाइए। ओके, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। तो कल मैं रेवेन्यू उठाऊंगा, आई विल टेक अप द रेवेन्यू टुमारो, रेवेन्यू कंसेप्ट हम खत्म करेंगे, फिर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, दैट इज ऑल, वही इसमें है क्या। So, basta lo es concept of revenue. Thank you very much.